আওয়াম নেই বললো তো हम क्या बोलें? ফুললি স্বাধীনতা দেওয়াটা উচিত হবে। Patients that should prevent us from When are we supposed to go? आदमी समझता नहीं है। Hey South Asians, how are you? Well, I'm Onindo and I'm back again with your favorite program, People. Well, winter has finally descended upon us, and with the descent of winter, we also get an opportunity to exploit our wardrobes the way we like. Well, during this time of the year, we need not think twice about putting on our best attire, because by all probabilities, it will not get spoiled due to the perspiration or the atrocities caused by the hot and humid weather prevalent in this region. Well, winter is the time for colorful clothes and fashion. And keeping all this in mind, we've set the topic of discussion for the day to be winter fashion. For some, it means panache, covering ourselves up with expensive lines of clothing from top to toe. Some feel it's actually about looking cool and casual. And then again, some feel it denotes looking unique. Some say that it just means looking good. And on the other hand, few others left say that it's not the attire that matters, but the person inside it that matters. So what we want to know is that, what do you think about the term fashion? So we are out here at one of the outlets of Pantaloons in Kolkata to figure that very thing out. Fashion exactly means the way you carry yourself. It's nothing, basically it is something like every person carrying himself. Fashion is the way the person carries his attitude, his style. Well, something I enjoy that I can wear and feel good about it. Fashion is that which makes me feel comfortable. Fashion, according to me, is something which is comfortable, something in which you look stylish, not something in which others look stylish. Fashion जो आप पे सूट करे. Style, my lifestyle is my own way. I will have to do in my own way. बंदा कंप्लीट जो है वो कवर हो, इस फैशन यानी इस किस्म का हो, ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हो ये. It is mean in which I feel very comfortable and which is very presentable. আমি যেটাতে কমফোর্টেবল ফিল করি সেটা. जो आप अच्छा कैरी कर सको वही फैशन है, जो आप पे सूट करे. Which is the way you carry yourself, revealing your personality and attitude, that's it. Actually, see, fashion means something which is in vogue, which is like right now, which you mean will make you, like people will talk that yes, that's something which has caught on their mind, something like that. मेरी नज़र में फ़ैशन अपना जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वही हैं, और आपका अपना स्टाइल जो होता है वो है. आप ट्रेंड्स तो आते जाते हैं, तो आप जो आपका अपना स्टाइल है वो उभर के आना चाहिए ज़्यादा. मेरी नज़र में फ़ैशन यही है कि एनीथिंग दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, आपको वो पहनना चाहिए, रादर देन जब आपको लगता है कि आप बहुत दफ़ा ओवरडू कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने आप पे अच्छी लग भी नहीं रही होती, तो वो लोग ना पहने प्लीज़. जो आप पे अच्छा लगता है वो पहने बिकॉज दैट्स फैशन फॉर यू. The situation is more or less the same. But in a way, that is kind of good, because if it meant the same for all of us, then most probably the world would have missed out on variations a little bit. Now people, with the descent of winters, stylish jackets, coats, cardigans, all start coming out of the wardrobe. It is the time for pullover, jumpers, colorful mufflers and scarves, cool skull caps. Depending on individual preferences and on what the in thing is, we adopt a certain style of clothing. Now our question to you is, what according to you is in vogue this season? Coats, you know, like overcoats, long coats and everything. And well, they're my favorite. And boots, I guess. I feel hoods are in fashion this winter, and maybe some printed sweaters are in fashion this time. I think the pullovers, the multicolored ones, I hope they are in fashion this winter. Recently কিছু কাজ করা জ্যাকেট পাওয়া যায়, স্পেশালি স্টেসি বা ওয়েক্স এই টাইপের জ্যাকেটগুলো প্রোভাইড করে বেশি. তো আর হুডিগুলো তো খুব অ্যাভেলেবেল এখন এবং খুব জনপ্রিয়. শার্টের সাথে হুডি বেরোচ্ছে, গেনির সাথে হুডি বেরোচ্ছে. कॉटन सिल्क और वेलवेट सर्दियों को इतनी खास कराची में तो नहीं होती, तो ऐसा जितना डिफरेंस नहीं होता कपड़ों में, बस वेलवेट वगैरह आप यूज़ कर लें. I don't know actually. This is my first time I'm shopping over here. I guess it's kind of cardigans you're wearing, that's quite cool, you're looking fine. And besides that, jackets are in.
And jeans always there throughout the year. I think জ্যাকেট আর আমি যেটা পরে রয়েছে এই টাইপের সোয়েটার বা কার্ডিগান যাই বলুন সেটা in vogue this winter something like jackets like something which suits you the complexion of yours something which suits your complexion is something which is in vogue सभी फैशन में स्ट्रेट शर्ट्स हैं पैनल्स हैं डिपेंड करता है कि मतलब आप किसको किस तरह कट देते हो किसका किस हिसाब से उसी तरह ही তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলে মেয়ে উভয়ের মধ্যে মানে বর্তমান যে আধুনিক ফ্যাশনগুলোর মধ্যে শালটা অনেক বেশি মানে খুব বেশি ফ্যাশনেবল তারপরও ক্যাজুয়াল ড্রেস হিসেবে জ্যাকেট ইউজ করে অনেকে লেদারের জ্যাকেট বা জিন্সের জ্যাকেট বা নর্মাল সফট কটনের জ্যাকেট বা জাতীয় গেঞ্জি বা জাতীয় ইউজ করে এখন বিশেষ করে এখন দেখা যাচ্ছে হুডওয়ালা এগুলো অনেক বেশি জনপ্রিয় এখন Well, I think like we have lots of choices for women. Coming for men, we have corduroy shirts. In that case, like, and for girls also, I think like they can get mufflers with matching with their shirts or jackets. In that case, that's what. I think a lot of color and fabrics, mixed variety of fabrics. Velvets are in again with a bang. इस दफ़ा सर्दियों में फ्लेयर्स वाली शर्ट्स हैं और फुल स्लीव ज़्यादा चल रही हैं सो दैट्स फैशन दीज डेज क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ तो कराची में ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है In fashion this winter, I must say jackets like what I'm wearing and cool t-shirts with narrow bottom jeans. इस समय काफ़ी अच्छा फैशन आया हुआ है जिस तरह लेडीज़ में चल रही है लॉन्ग शर्ट्स और लॉन्ग ट्राउजर्स बड़े बड़े दुपट्टों के साथ Well, the retailers are definitely going to have a very good time. According to you, so many things are in vogue this winter, and that is quite justified because different people have different tastes and preferences. Now, when we talk about clothing and fashion, the one thing that lingers in our minds is the word brand. Starting from Armani and Versace, United Colors of Benetton, Levi's, Pepe, and if you're game for the sporty stuff, then Adidas, Puma, Nike, etc. Now, we are pretty excited to know that what according to you, or which brand according to you, keeps the most fashionable winter collection. According to me, I think it's Levi's. I really like Levi's winter collection. अगर आपको टी शर्ट्स वगैरह शर्ट्स चाहिए तो लिवाइस पे अच्छी मिल जाएंगी और कलर ऑफ बेंटन एक दो ब्रांड है जहाँ पर आपको अच्छा ठंड का स्टफ़ मिल जाएगा अगर आप वेस्टर्न क्लोथिंग में पूछें तो वो तो गुची और इनके ही स्वेटर्स और लॉन्ग कोट्स और इस तरह की चीज़ें I feel Monte Carlo. It's still universal. বিভিন্ন রকমের ব্র্যান্ড আছে তবে যেটা পছন্দ হয় ব্র্যান্ডটা বেশি মানে গুরুত্ব না তবে আমার পছন্দ হলে আমি ওটা ইউজ করি Lee Cooper according to me Lee Cooper. ব্র্যান্ড ওয়েস্টিক্স ইউজ করি আর এছাড়া এভাবে স্পেসিফিক কোনো ব্র্যান্ড আমি সাপোর্ট করি না no idea Mango I don't know যেমন স্টেসি ট্রেন্ডস স্মার্টেক্স এই ড্রেসগুলো আমাদের পরা হয় শীতের সময় এরা নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে আসে तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए और सब अपने अपने विंटर कलेक्शन भी निकालते हैं इससे गुल अहमद है प्राडा है और बोनांजा में कल गई थी जो पार्क टावर पे वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं तो हाँ यू कैन से बोनांजा इज़ वेरी गुड Actually, it depends. Like if you have to go for jacket, you have to go according to that. You can check out in the branded shop. I think Rig. I prefer that one a lot. Monte Carlo. It's no personal brand I used to. It's there, but basically, if I go beyond my means, then it's always Armani, Dolls and Gabbana. They're always there. But besides that, I like Bare Denims and stuff. That's quite cool. वैसे अगर देखा ख्वाबों में हसन शहरियार ही नज़र आएगा लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो आपके खर्चे में आ जाए Well, you've named quite a few, and some are of the opinion that it is not only the big names that have a good collection, but also you might have a look at a very unique kind of attire at a very shabby looking roadside shop as well, if you're on the lookout for it. Now, at this point of time, we go in for a short break, but do stay tuned as we have more fashion for you when we come back. जब आवाम नहीं बोलता तो हम क्या बोलें फुल्ली স্বাধীনতা দেওয়াটা উচিত হবে Patients that speak to and ask for When are we supposed to go? आदमी समझता नहीं है